Let me know if we can begin. So this is one of the important topics, and I am not trying to scare you, but one of the difficult ones. So please pay utmost attention to this unit. Higher education, research aptitude. These can be a little complex from your exam perspective. Okay, I think we should begin now. The first question is, which of the following statement is not true in context of participatory research? It recognizes knowledge as power. It is a collective process of inquiry. It emphasizes on people as experts. Its sole purpose is production of knowledge. तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च के बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. ओके आपको इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट फ्रेंड्स फाइंड आउट करना है. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. ओके डू रिमेम्बर नॉट पूछा है विच इज नॉट इन ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिसिपेटरी रिसर्च. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी. इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज. देखिए पार्टिसिपेटरी रिसर्च एक तरीके की अप्रोच है जो यूजुअली कम्युनिटीज वगैरह में होती है जहां पार्टिसिपेशन होता है एंड देन देयर इज एक्शन. सो इफ देयर इज सम प्रॉब्लम व्हाट पीपल डू, पीपल find they themselves take part in the research and collectively वो एक solution पे पहुंचते हैं. Okay, there is inquiry, experimentation and they lead to the result. So ये होता है पार्टिसिपेटरी. इसको पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं. ओके एंड यहाँ क्या है, हम चेंज चाहते हैं. ओके वेरी गुड लक्ष्मी प्रिया, योर आंसर इज करेक्ट. इट इज ऑप्शन डी. पार्टिसिपेटरी रिसर्च आप लोग को समझ में आया आई होप. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in which of the following arrangements a wider spectrum of ideas may be made possible? So research article या वर्कशॉप मोड, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, क्या होगा. किस अरेंजमेंट में there will be wider spectrum of ideas and issues? This question is very simple and very obvious. The answer is it is workshop mode, option B. वर्कशॉप में क्या होता है, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है. दे टीच यू on a particular topic and then you are made to do it then and there. So आपकी problems जो है वो भी sort out हो जाती है. You get to know better about जिस भी topic के बारे में वो research है. Okay, so workshop mode gives you wider spectrum. Research ethics does not include integrity, subjectivity, objectivity or which is the right answer. See, there are so many ethics that a researcher should follow. एथिकल नॉर्म्स होते हैं रिसर्च में. इस क्वेश्चन का आंसर है सब्जेक्टिविटी. फ्रेंड्स रिसर्च में आपको
ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी डिग्निटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होती है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स विच अ रिसर्चर हैज टू डू. एंड सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. सब्जेक्टिविटी क्या क्या मतलब होता है? इट मीन्स योर पर्सनल व्यूज शुड नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ योर स्टडी. ओके, आपके पर्सनल थॉट्स इन्फ्लुएंस नहीं करने चाहिए. देयर शुड बी नो पर्सनल फीलिंग्स इन योर रिसर्च. आपकी रिसर्च आपके पर्सनल थॉट्स और आइडियाज और ओपिनियन से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिसर्चर. So research ethics does not include option C, subjectivity. Next you have is Newton's discovery of the law of gravity belongs to. So you know the story where apple falls and Newton thinks of gravity and he works so much on it. So what is that? In which kind of research will it fall under? Fundamental research, applied research, action research, or qualitative research? Quantitative research. Okay. So fundamental research is the answer to this question, option A. इसको हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं. ओके, प्योर रिसर्च भी कहते हैं. एंड इट डज नॉट जनरेट फाइंडिंग दैट हैव इमीडिएट एप्लीकेशंस. ओके, ये बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होती है फॉर इंप्रूविंग साइंटिफिक थ्योरीज एंड अंडरस्टैंडिंग. ओके, न्यूटन्स डिस्कवरी was made to improve scientific theories to make it better and for other phenomena as well. So इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए. While sampling, if a researcher decides to interview every 15th name on a list, it is an example of quota sampling, systematic, deliberate or sequential. So ये क्वेश्चन सैम्पलिंग से है. See, as the if for those who don't know what sampling is, when you have a population, just imagine 1 lakh people are there. So you cannot do your research in using all those 1 lakh people. Okay, this is quite impossible. So what we do is हम उसमें से एक sample select करते हैं, then we do research on it. Now they are saying कि ये technique use हो रही है where a researcher is using every 15th. See, there is a list. समझ लीजिए list of 1 lakh people are there. Okay, this is going to be extremely long list. So what he did is he took every 15th person on that list. So ये आपको समझ में आ रहा है? There is a system being followed. Okay, randomly it is not being picked up. सैम्पलिंग भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी. सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जो आता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे हैं? एवरी 15 मेंबर इज पिक्ड अप इनटू द सैंपल एंड उन पे फिर रिसर्च हो रही है. Friends, this kind of question has come a lot in 2020, I would like to tell you. Because क्या करेंगे? They will give you a scenario and then they will say कि which type of sampling is being used, or they can also say which type of research
the researcher is going to use. So this is very important. You just you can't just read the definition, आपको in depth knowledge होनी चाहिए, only then you will be able to solve the question. Okay, do remember these kind of questions. So every 15 member they are saying systematic sampling. If they would have picked up any person, that would be simple random sampling. Okay, and quota sampling होती है एक तरीके की, where there is fixed quota. For instance 100 people पे अगर आप ले रहे हैं men and women पे, and वहाँ है समझिए 1000 है, and then you are having 600 boys and 400 girls. So आप अगर आपको 100 का सैंपल चाहिए तो आप लेंगे 60 to 40. तो ये एक तरीके का कोटा हो गया है. दैट इज कोटा सैम्पलिंग. डेलिब्रेट एंड सीक्वेंशियल सैम्पलिंग ये किसी तरीके की सैम्पलिंग नहीं है, जस्ट दीज आर गिवन टू कंफ्यूज यू. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. When the likely effects of an incident or a dependent variable are investigated, it is known as survey research, ex post facto research, action research, or field investigation. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. यहाँ क्या कह रहे हैं? व्हेन द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ एन इंसिडेंट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल आर इन्वेस्टिगेटेड. सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे आप देख सकते हैं. अगर आपको लेना है एक वेट के ऊपर कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेट on self-esteem. Okay, you know, when people are obese or they are overweight, so self-esteem pe maybe it would be a little low, because it affects how people look at you on your physical appearance. So what you do is you divide all the people in groups, like different weights: underweight, normal weight, overweight, and then you measure the self esteem. So ये एक तरीके का एग्जाम्पल है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का. ओके, जहां रिसर्चर it takes the effect or dependent variable and examine the data to establish the cause, why it is causing. Okay, external validity in research refers to the rigor of the study, accuracy of a procedure, relation of the researcher's problem with the researcher's personal life, the extent of generalizability that the result provides. External validity in research. What is it? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, द एक्सटेंट ऑफ जनरलाइजेबिलिटी. जनरलाइजेबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर हम रिसर्च किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में हमने प्रूव किया है एक्स सिनेरियो में, तो वो दूसरे कंडीशंस में भी सेम रिजल्ट प्रूव होना चाहिए. अगर हमने एनवायरनमेंट चेंज किया है तो रिजल्ट डिफर नहीं करने चाहिए. ओके, आपकी कोई कंक्लूजन एक पर्टिकुलर सेट अगर आपने अप्लाई किए हैं, सो इट शुड ऑल्सो फॉलो द सेम इफ यू अप्लाई इट ऑन द अदर सेट. ओके, फॉर अदर सिचुएशन ये होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी. जनरलाइजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज, a doctor studies the relative effectiveness of two drugs of dengue. So you know it's a disease, and his research would be classified as I already told you, that this kind of question can come. They'll give you a situation and then they can ask which type of research is going to be used. ऐसी research इधर use होगी वो आपको बताना है.
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, एथनोग्राफी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ओके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नाम से ही पता चल रहा है कि आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, इट इज द डॉक्टर इज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट to see which drug or you can say which medicine has better effect on the patient. Okay, so through experiment you are going to see, अगर आपको if you want to test a new drug you can use experimental research. Next you have is, which research method is most appropriate if a researcher is looking for a causal relationship? Experimental method, case study, correlation study or naturalistic study? ओके कॉजल रिलेशनशिप को आप ये भी कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट. ओके इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल मेथड. जहां हमने अभी देखा कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड. नेक्स्ट, the main difference between longitudinal and cross-sectional research is in terms of frequency of data collection, primary versus secondary, qualification of a researcher or none of the above. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए frequency of data collection. So cross sectional research वो होती है जहां पे जो रिसर्चर है इट वो मेजर करता है जो भी रिजल्ट है एट पर्टिकुलर एंड सेम पॉइंट ऑफ टाइम. ओके फॉर इंस्टेंस अगर आप देख लीजिए इफ यू वांट टू से दैट हाइट ऑफ 10 year girls is less than height of 12 years girl. So आप क्या करेंगे, you will take a sample of 100 10 year girls and then 100 12 year girls एंड एक ही पॉइंट पे आप ऑब्वियसली आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि आज आपने कुछ स्टूडेंट्स की आज हाइट नापी देन आप 6 महीने बाद मेजर कर रहे हैं देन यू आर टेकिंग आउट द रिजल्ट. ये नहीं हो सकता ना, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सबका हाइट मेजर करनी होगी. ओनली देन यू कैन से दैट 9 10 year old इज लेस देन 12 year old. तो ये होगा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन यहाँ एक ही साथ करेंगे क्रॉस सेक्शनल में एंड लॉन्गिट्यूडनल में आप क्या करेंगे एट दिस डिफरेंट टाइम यू विल कलेक्ट द डेटा. ओके so this was the last question in our session. Lastly I would like to tell that the batch 1 for June 2020 has begun. The registrations are open. I would like to emphasize on a target of 75 plus in paper 1. So if you are interested you can download the GOU app and the link for it is you can see on the screen and the same is present in the description box. Download the app and you can register and gain the most out of if you do it now. In this plan, this is a special offer where we provide you 40 beginner level test. आपको 40 beginner level test होंगे, आपको 10 intermediate और 10 advanced level test होंगे इसमें. Also, you will get
500 MCQs on each unit, ये डिफरेंट होंगे आपके टेस्ट से। कंप्लीट वीडियो के थ्रू हम आपको कोर्स कवर कराएंगे, थ्योरी के थ्रू and through MCQs. You will get ebook and there will be a test series for 2010 to 2019. पेपर 1 के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज. सो दिस विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप देखेंगे, इफ यू आर एबल टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नेट किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है. Okay, don't forget to join. The fees, we have a special offer for people who join before 31st December. Our target is 75 plus. If you score less than 65, your fees will be refunded, and if you get more than 85, you will get rewards. So the fees for joining is 999. If you are interested, you can join on our GOU app and we will directly add you to the group. Alternatively, you can join on our paid WhatsApp group, जहाँ same amount होगा आपका, and the fees from January is going to be 1999. So it's better you join before 31st of December. Don't forget to download the app. If you have any doubts or queries, please write it down in the comment section. Okay, we'll meet tomorrow with more questions and your preparation for your coming 20